Do you know how to fix Play Store not downloading any app in your Android phone? Then here is the fix. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग्स पे जाएंगे. लेट्स गो टू द फोन सेटिंग्स, टैप ऑन इट एंड देन वी हैव टू टैप ऑन एप्स. एप्स पे क्लिक करेंगे. ऐप पे क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी ऐप मैनेजमेंट ऑप्शन इज देयर, तो यू हैव टू क्लिक ऑन ऐप मैनेजमेंट. अगर आपके पास ये आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ऑल ऐप्स पे क्लिक करना, वहाँ पे आपको सारे ऐप्स दिख जाएंगे. सारे ऐप्स दिख जाएंगे तो यहाँ पर आप मैनुअली सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर ऐप को, या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या अपडेट करना है, गूगल प्ले सर्विसेज, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, गूगल प्ले स्टोर से. तो लेट्स क्लिक ऑन गूगल प्ले सर्विसेज फॉर AR. लेट्स टैप ऑन इट. Now what we have to do is we have to tap on force stop. Let's tap on it. Click करेंगे इस पे and then tap on storage uses. Then most important thing is we need to clear the cache. So clearing the cache generally fix the problem. So cache को clear करेंगे. Now you can see it is showing as 0. देन क्लिक करेंगे क्लियर डेटा पे. क्लियर डेटा पे क्लिक करेंगे. दिस ऐप डेटा इंक्लूडिंग फाइल्स एंड सेटिंग्स विल बी परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम दिस डिवाइस. सो इस पे क्लिक करने के बाद आप जो सेटिंग्स एंड बेसिक से जो परमिशंस होती हैं वो आपको दोबारा से जब ऐप ओपन करेंगे तो मांगेगा. अदर देन आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको कोई इंपॉर्टेंट डेटा लूज नहीं होगा डिलीट पे क्लिक करने के बाद. लेट्स टैप ऑन इट एंड देन फोन को रीस्टार्ट करेंगे. आफ्टर रीस्टार्टिंग द फोन यू हैव टू गो टू प्ले स्टोर. लेट्स फाइंड इट. You can see Play Store is here, and now whatever app you want to download from Play Store you will be able to download it. So for example, I just want to click on Minecraft. Okay, it is asking for money, so I should not click on that. Let's Park Petrol Rescue World. So let's install it. You can see now it is getting started downloading. So I hope you like the video and your problem is fixed. Thank you for watching.